morning to all. Here I am again for discussing about two very interesting questions from the relation chapter, and I think it is from the NCERT book also. The basic questions and the conceptual question also. Okay, so I think you all are fine and just you are enjoying your quarantine days. So stay isolated from the social gathering and any kind of social interactions need to be actually avoided now. No need to interact with the infected people, those who have the flu as well, any kind of flu any people may have, but you should stay away from that kind of peoples. Okay, so here you can see the questions as well. Two questions are there. Okay, so these two questions, just first write these two questions. Okay, these two questions actually is very conceptual. The second one is very important for the board as well, and the first question is actually not important for the board but very interesting and very actually conceptual question also, but not so important for the board and for the entrance also. Okay, so here in the first question, okay, in the first question we are going to solve the first question now. हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर क्या बोला गया है. देखो यहाँ पर बोला गया कि इफ द रिलेशन आर इक्वल्स टू दिस एंड एक्स इज वाइफ ऑफ वाई. ठीक, दैट मीन्स एक्स और वाई के बीच जो रिलेशन है वो क्या है, वो स्पाउस है. सो दैट मीन्स यहाँ पर तुम्हें इक्विवेलेंस प्रूफ करना है. इस रिलेशन को चेक हो जाना, प्रूफ चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं. सपोज यहाँ पर आर क्या गिवन है, ए एक ऑर्डर पेयर गिवन है, एक्स और वाई. एक्स एक एलिमेंट है, वाई भी एक एलिमेंट है, और एक्स और वाई के बीच क्या रिलेशन है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई. वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. सो फॉर द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव property. For the reflexive property, this thing you need to write x is wife of y. That means y यहाँ पर husband है और x क्या है, wife है. ठीक है, तो यहाँ पर y क्या है, husband है, और x wife है. ठीक है, तो यहाँ पर for the reflexive property हम लोग को क्या एज्यूम करना है पहले, if x equals to y. ये तो हम लोग एज्यूम ही नहीं कर सकते. हस्बैंड और वाइफ इक्वल हो गया, ये हम लोग एज्यूम कैसे करेंगे, जेंडर ही चेंज कर दिया तुम लोगों ने. हैं, तो यहाँ पर ये जो x इक्वल्स टू y, we can't choose. x equals to y, we can't choose here. So that means this implies x comma x doesn't belongs to the real number. Sorry, the relation set. So R is not reflexive. Is not reflexive. Depends, एक इंसान खुद का ही वाइफ कैसे होगा. वह हस्बैंड वाइफ होने के लिए तो दो ही चाहिए, दोनों डिफरेंट जेंडर्स का होना चाहिए. तो यहाँ पर अगर मैं एक्स और वाई दोनों को इक्वल ले लूँ तो यहाँ पर जेंडर भी इक्वल हो गया, दोनों ही वाइफ हो गया, दोनों ही हस्बैंड हो गया. तो ये इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है. तो ये आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. इंडिया में क्या, वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है ये सब. ओके, तो यहाँ पर R is not reflexive. Okay, so the next one, the symmetric property. Symmetric property. Okay, for the symmetric property, here the same thing, x comma y belongs to R, and this implies x is wife of y. Okay, तो यहाँ पर y husband, x wife. Now x is interchanging with y. x और y को इंटरचेंज कर लो. अब यहाँ पर सपोज मैं तुम्हें ये बात बोल रहा हूँ कि सपोज मैं तो मेरा वाइफ, ठीक है, तो मेरा वाइफ क्या है, मैं हस्बैंड हूँ, वो वाइफ है. ओके, तो उसको अगर मैं इंटरचेंज कर दूँ तो वाइफ मेरी जगह आ जाएगा और मैं वाइफ की जगह चला जाऊंगा. तो ये वर्ड कैसे होगा, आई एम द वाइफ ऑफ
माई वाइफ. हाउ इज इट पॉसिबल? मैं जेंडर मेल जेंडर हूँ, मैं कैसे वाइफ हो जाऊंगा? मैं तो हस्बैंड ही रहूंगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो तुमने इंटरचेंज किया है, ये इंटरचेंज वाला प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लाइन तुम लिखोगे, which is not possible, which is not possible. ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर x y का वाइफ है तो x ही वाइफ रहेगा, y ही हस्बैंड रहेगा. यहाँ पर इंटरचेंज करोगे तो y जो है वो वाइफ नहीं हो जाएगा. ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है तुम इंटरचेंज नहीं कर सकते. यू कांट इंटरचेंज देयर पोजीशंस आल्सो. वाइफ विल बी वाइफ एंड हस्बैंड will be husband as well. So that is x comma y belongs to R, but y comma x not belongs to R. So R is not symmetric. Not symmetric. Okay? Okay? फिर ट्रांजिटिव में क्या होगा? देखो, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए मुझे एक्स वाई जेड 3 लोग यहाँ पर बिलोंग करेगा. लेट अस चूज 3 members. Okay, now x comma y belongs to R. This implies x is wife of y. Okay, so y comma z belongs to R. So यहाँ पर क्या हो जाएगा? y is wife of z. तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये देखो, x is wife of y. Okay, y यहाँ पर क्या होगा? हस्बैंड होगा, और x क्या है? वाइफ होगा. तो y यहाँ पर क्या है? हस्बैंड. दैट मीन्स मेल. ओके, और यहाँ पर y क्या हो गया? y इज वाइफ ऑफ z. y यहाँ पर वाइफ हो गया, किसका? z का. तो y यहाँ पर देखो पहले हस्बैंड था, मेल था, आज तुमने उसको वाइफ बना दिया. हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल एज वेल. सो दैट मीन्स दिस कंडीशन which is not true. Okay, so the transitive relation cannot be constructed. So R is not transitive. So यहाँ पर देखो, R is not reflexive, R is not transitive, R is not symmetric. That's why R is not equivalence. Okay, ठीक है? इतना सुंदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहाँ पर देखो, ये हर किसी का ही प्रैक्टिकल लाइफ में उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है. ठीक है, अगर तुम चाहो इम्प्लीमेंट करना तो इम्प्लीमेंट होगा यहाँ पर. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो, ये प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल है. तो देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे जो रिलेशन बनता है, ओनली जो फ्रेंडशिप रिलेशन, ब्रदर रिलेशन, सिस्टर रिलेशन. सो इस टाइप का रिलेशन ही सिर्फ ये सब प्रॉपर्टी होल्ड करता है. बाकी सब जो रिलेशन है वो ये सब प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है. हर एक रिलेशन में तुम सब प्रॉपर्टी यूज कर दोगे, ये तो पॉसिबल नहीं होगा. सो यहाँ पर R इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन है. ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है? हियर R इक्वल्स टू T1, T2 such that T1, T2 यहाँ पर ट्राइंगल्स हैं और जो कि
कैपिटल टी से डिनोट करता है। जैसे कि क्वेश्चन में तुम देख सकते हो, टी इज अ सेट ऑफ ऑल triangles. That means all kind of triangles will be comprised in the T set as well. So from whatever the triangles will going to be chosen, all of the triangles will belong to the triangle set. That means capital T set. है? तो यहाँ पर देखो कैपिटल टी सेट से तुमने दो ट्राइंगल चूज किया है, T1 एंड T2, और T1 T2 के बीच एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि T1 एंड T2 आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। T1 और T2 क्या होता है, क्या ट्राइंगल होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। जब ये दोनों ट्राइंगल इक्विलैटरल होता है तभी उन लोगों के बीच क्या होता है, रिलेशन बन सकता है। दैट मींस दोनों सेम टाइप का ट्राइंगल होना चाहिए। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, दूसरा यहाँ पर स्केलिन ट्राइंगल हो गया। दैट मींस यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट ए रिलेशन बिटवीन दिस टू ट्राइंगल्स। सो इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट ए रिलेशन बिटवीन दिस टू ट्राइंगल्स, then it to be the same triangle as well. That means equilateral, equilateral, right angle, right angle, scale, scale. Okay. So यहाँ पर reflexive property पहले जाओ। ये the reflexive T1, T2 belongs to R. This implies T1 and T2 equilateral triangle. Okay. तो यहाँ पर if T1 equals to T2, अगर चूज करें T1 and T1 is equilateral, लेकिन दोनों सेम टाइप का ट्राइंगल, दोनों सेम ट्राइंगल, तो ये भी ABC, ये भी ABC, तो दोनों ट्राइंगल क्या होगा, ये अगर इक्विलैटरल होगा ये भी इक्विलैटरल होगा। तो ये T1 ये T1 उनकी बीच रिलेशन बन गया। दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल को हम लोग सेम अगर ले भी ले, दोनों ट्राइंगल इक्विलैटरल ही होगा। दैट मीन्स सो T1, T1 belongs to R as well. So R is reflexive. R is reflexive. Okay? Then सिमेट्रिक में आओ। हो गया, ये पॉज करो, उसके बाद ये नोट कर लो। फिर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में T1, T2 बिलोंग्स टू R। रिलेशन होता है T1 और T2 के बीच, और क्या रिलेशन है, अंडर व्हिच कंडीशन, T1 एंड T2 आर इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, दैट मींस इक्विलैटरल ट्राइंगल मींस क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होता है। ओके, सो इफ T1 T2 एक्सचेंज कर दो, जैसे सपोज यहाँ पर ये ट्राइंगल T1 नाम है, ये ट्राइंगल T2 नाम है, और दोनों के बीच का रिलेशन है, दोनों ही इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर ये दोनों इक्विलैटरल है तभी उन लोग के बीच तुम एक मैपिंग बना सकते हो। अब क्या करोगे, उसको इंटरचेंज कर लो। दैट मींस T2 यहाँ पर आ जाए और T1 वहां पर चला जाए, तो ये क्या इक्विलैटरल नहीं रहेगा, दोनों ही इक्विलैटरल रहेगा। तो दैट मींस रिलेशन भी बन जाएगा दोनों में। तो दैट मींस यू कैन इंटरचेंज देयर पोजीशंस आल्सो, क्लियरली यू कैन सी। सो T2 and T1 are also equilateral. That implies T2, T1 also belongs to R. So R is what? So R is symmetric. Symmetric. Okay? इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो। फिर उसके बाद ट्रांजिटिव, उसके बाद ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए तो तीन ट्राइंगल लेना पड़ेगा हम लोग को। सो लेट T1, T2, T3 हम लोगों ने तीन ट्राइंगल चूज किया। कहां से, बड़ा वाला जो सेट है, फ्रॉम द T set as well. According to the question, capital T is a set of all triangles. Okay, so from that set we have to choose three different triangles. Okay, so here T1 or T2, there is a relation between these two. Then what is the relation? T1 and T2 are equilateral.
T2 और T3 के बीच भी एक रिलेशन होता है, R क्या होता है, T2 एंड T3 आर इक्विलेटरल। ओके, अब मुझे बोलो हम लोग को इसके बीच रिलेशन बनाना है। देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल T1 है, ये ट्राइंगल T2 है, ये ट्राइंगल T3 है। अब ये दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वेरी गुड। ये दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये दोनों भी तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ही होगा। दैट मींस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल के साथ रिलेशन बना सकता है। दैट मींस अगर T1 और T2 के बीच क्या रिलेशन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल से दोनों ही इक्विलेटरल होता है, इसलिए दोनों के बीच मैचिंग बन गया। T2 और T3 के बीच क्या रिलेशन होता है, दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए दोनों के बीच रिलेशन बन गया। अब ये भी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है, तो ये अगर ये इक्विलेटरल है तो इसके साथ भी तो रिलेशन बनेगा ना, T1 और T3 के बीच भी रिलेशन आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का। सो दैट मींस combining this two, T1 and T3 also what, equilateral triangle. So this implies T1 comma T3 belongs to the relation set as well. So R is what, transitive. Okay? So यहाँ पर देखो R is reflexive, symmetric और transitive हो गया. That means R is what, equivalence relation. Just write the final statement. So R is equivalence relation. So R is equivalence relation. Okay? दो क्वेश्चन कवर हो गया। अब तीसरा एक क्वेश्चन लो, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछना, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो है, एकदम सिंपल क्वेश्चन से ये सब। थर्ड क्वेश्चन जो है, इफ R and S are two different equivalence relation, R और S दोनों अलग अलग इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। प्रूव दैट R intersection S is also equivalence. Very important, equivalence relation. Prove that R intersection S is also equivalence relation. Here the set is not given. From where the elements is going to be chosen, the set is not given. That means anything we can choose, any elements and anything, any number we can choose, no problem here. But the यहाँ पर जो problem है, जो question है, not problem actually, this R and S are two different equivalence relation. That means R एक relation होता है, अलग relation है R, ठीक है, ये एक relation होता है। तो ये R अगर relation है और ये अगर equivalence होता है, that means what, this R relation will satisfy this reflexive, symmetric and transitive property. S it is a different relation, तो ये different relation, ये भी symmetric है according to the question you can see. So ये भी reflexive, symmetric और transitive property satisfy करेगा. So ये दोनों अलग अलग different equivalence relation है. Now if we take the intersection of these two equivalence relation, that means we have to deal with the common elements whatever they have. That means I mean to say this relation R and this relation set S. So both the relation set will have the different kinds of order pairs. That means if I am choosing R intersection S set, that means what, we have to deal with the common elements, common order pairs, which is comprised in the relation set R as well as in relation set S also. ठीक है, तो यहाँ पर R सेट में कुछ ऑर्डर पेयर है, S सेट में कुछ ऑर्डर पेयर है, ठीक है। अब R इंटरसेक्शन S बनाना है, दैट मीन्स क्या है कि दोनों में जो ऑर्डर पेयर्स कॉमन है वो कॉमन
ऑर्डर पेयर्स लेके ही हम लोग को डील करना है। जो अनकॉमन है, जो ऑर्डर पेयर्स अनकॉमन है, उन लोग को लेके हम लोग को डील यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, ओके, समझ में आया क्वेश्चन? तो यहाँ पर देखो, इफ R is equivalence, that is R is reflexive, R is reflexive. This implies R is equivalence, which is given by, which is, okay, no need to write. R is reflexive means what? X comma X belongs to R. When this type of order pair will belong to the R set relation set, then I think it will be reflexive, as you all know. So R is reflexive. R is symmetric also. Symmetric. So symmetric मतलब यहाँ पर अगर मैं x y belongs to R and the same relation set y x, the reverse order pair will also belong to this same relation set. So then I think this R is symmetric. Okay. So R is transitive also. R is transitive. So R is transitive. इसका मतलब क्या होता है? R is transitive. X y belongs to R. Y z belongs to R, and X z also belongs to R. Okay. So all of these properties are from the reflexive, symmetric and transitive concepts as well. तो reflexive में क्या होता है? दोनों same elements के बीच relation होगा. As you all know that X belongs to R. That just like 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, this type of order pairs will belong to the relation set. Here X, Y belongs to the R and Y, X also belongs to R. That means the reverse order pair will also belongs to the the relation set. Here transitive. Transitive means what? X, Y. Friendship between X and Y is there. So that's why this order pair X, Y belongs to the real number. The relation set. Here Y, Z, there is a friendship relation between Y and Z as well. So combining these two things, we will get X and Z. They are also friends, and which is this order pair belongs to the relation set. तो ये हो गया R relation का बात यहाँ पर. Okay. Similarly, this another relation is given in the question, which is also equivalence. Okay. So यहाँ पर you have to write the same thing. And most importantly, we have to deal with the R intersection as said. That means all of the order pairs will be common. That means whatever the order pairs are going to be chosen from the two different relation set, that should be equal. That should be same. Okay, same होगा तभी तो यहाँ पर intersection set में आएगा. R में जो order pairs है, S में जो order pairs है, दोनों order pairs में, दोनों collection of order pairs में से जो order pair common है, वही तो आएगा R intersection S में. ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सोच लिया कि हम लोग डील करेंगे कॉमन एलिमेंट्स के साथ. ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है, जो ऑर्डर पेयर्स हैं रिलेशन सेट में R में, ये देख लो वही सेम एलिमेंट्स S में भी रहेगा, क्योंकि R इंटरसेक्शन S से मुझे डील करना है. तो यहाँ पर जस्ट इन द नेक्स्ट पार्ट द सेम थिंग शुड बी रिटन. जस्ट इन प्लेस ऑफ R यू शुड राइट S. Everywhere this S should be written. Okay. पहले तुम्हें R का ये सब लिखना है, उसके बाद नीचे if S is equivalence relation, then ये सब लिखना है. Okay. S is equivalence, then ये सब लिखना है. पहले R का लिखना है, फिर S का लिखना है. ठीक है. Now हम लोग यहाँ पर R intersection S में मूव करेंगे. तो यहाँ पर देखो here for R intersection S. Okay, यहाँ पर देखो X, X belongs to R and X, X S में भी belong करता है. This implies the whole thing combining these two R X, X belongs to R intersection S also. So R intersection S is reflexive because you can see X, X belongs to the R intersection S set.
Now in the next part, x comma y belongs to R. Y comma x belongs to R, because R is symmetric. I think we have written this part. And x comma y belongs to S also, and y comma x also belongs to S. Now combining these two, x comma y belongs to R, x comma y belongs to S. That means x comma y belongs to R intersection S also, and y comma x also belongs to R intersection S. So R intersection S is symmetric. Okay. अब देखो हो गया. अब ट्रांजिटिव में आओ. सो ट्रांजिटिव में देखो, नाउ x, y belongs to R, y, z belongs to R, x, z belongs to R. From the transitive property description, just you can see. And x, y belongs to R, y, z belongs to R, and x, z also, sorry, not R actually, S. So now combining these two, x, y belongs to R intersection S. Here y, z belongs to R intersection S, and x, z also belongs to R intersection S. So combining these three parts, we can say R intersection S is transitive. So R is reflexive, symmetric, and transitive as well. So R is what? Equivalence. Very important question. Okay, the same pattern question, just that will be your homework, and that you can try this question. Just use R union S. Okay, R intersection S. Here you can see the solution. It is R union S. Will it be the equivalence relation? Here R and S are different equivalence relation that will be given, and you have to check whether this R union S will be equivalence or not. Just you can check. Okay, and if you are not able to solve this R union S question, then you can ask me the question in the comment section. Then I will solve it in our next video also. Just one day will be given to every students, and you should solve this question as well. Okay, and just you can see actually in this relation chapter, different questions are solved. Okay, so here today you can see already we have done 3 questions as well. Okay, now if you solve the R.D. SHARMA questions and the NCERT questions as well, and from the R.D. SHARMA actually, and from RSL, R.D. SHARMA, and whatever you have from NCERT exercise question, those questions are important for the board standard also. That was done also in various video classes, and from the R.D. SHARMA book, those questions actually need to be done, which type of questions are done in the video in this various video classes as well, and the same pattern questions will have to be done from the R.D. SHARMA book as well. Okay, so I think you need to solve that kind of questions actually, and some question actually the homeworks and the question numbers will be given, some suggestions will be given, and from that suggestion you should solve that kind of questions also. Here actually I am not giving the suggestion because I have no book here. I have no book, just whatever is being done till today, that is only from our mind, from my mind. Okay, actually I used to remember these questions as well, and that's why just I have collected from my mind this and I used to solve each and every questions as well. So actually
various questions are there. Okay, so you can provide me the questions also in the comment section. Okay, then that kind of questions can be solved also, because I don't remember anything here, whether any question, any type of questions actually are being left till now or not. So just provide me the questions from the different books. You can see the different books, and you provide me the questions also, and I will try my best to provide you the solutions as well. Okay, so in this video these 3 questions will be covered, and after that another video will be prepared. In that video some questions will also be done. Okay, so before that just stay at home, don't go outside without any proper reason. Okay, and stay healthy also. And if you like my video, then just subscribe and push the bell icon as well, and just give me the like also. Okay, so actually this is for my encouragement. So if you are subscribing my channel, if you push the bell icon, then I think whenever I will upload some videos, the notification can be received by you. Okay, actually this part is for your convenience and for my conveniences also. And this like means what? If you like my videos, then I will be encouraged. Okay, now students are actually this gathering some knowledge from my lectures. Students are actually going to be going to solve the questions by the help of my lectures. Then I think I will be encouraged, and for my encouragement, for my sake, and for the better conveniences, you should give me the like also. Okay, so whatever, if you don't like the videos also, you can give the dislike button also. So stay healthy and goodbye. Jai Hind.